Hello everyone. So again, here is Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor with my YouTube channel Adarsh. Today's topic is hormonal disorders. That is part 2. Next topic इसके पहले हमने जैसा हम लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं, ये करीब शायद 8th या 9th वीडियो होगा। एंडोक्रिनल सिस्टम का जो सीरीज हम देख रहे हैं उसमें लास्ट वीडियो में हमने देखा था हार्मोनल डिसऑर्डर्स इन जनरल। कितने तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन बनाते हैं, एंडोक्राइन सेल्स टिश्यूज हैं, और उनके इम्बैलेंस से क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। So not going into the much details of what do you mean by imbalance, what do you mean by positive feedback mechanism, what is negative feedback mechanism, directly coming to the disorders that are causing due to stress. Stress की वजह से जो डिसऑर्डर्स हैं, जो सिलेबस हम फॉलो कर रहे हैं उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ हार्मोन्स एंड स्ट्रेस एंड हार्मोन्स एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो आज हम देख रहे हैं हार्मोन्स एंड स्ट्रेस, और डिटेल्स हमने काफी कुछ नेम्स ऑफ हार्मोन्स जो भी हम लेंगे, उनका एक्शंस, उनकी जो हार्मोन्स हैं उनकी वजह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स, कैसे ट्रीटमेंट होगा, ये सारी चीजें हम इसके पिछले वीडियो में काफी डिटेल्स में देख चुके हैं। आज हम सिर्फ स्ट्रेस पर एम्फसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेस डाल रहे हैं स्ट्रेस पर, कि कैसे हमारे शरीर में जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस में बी डिफाइंड एज any situation tends to disturb equilibrium between a living organism and its environment. जहाँ हम रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, अगर स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट ज्यादा दिखता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन पे ही होता है। ये एक बहुत ध्यान देने की चीज है कि स्ट्रेस हम ज्यादा एग्जिबिट कर पाते हैं क्योंकि हम अपने को शो ऑफ कर सकते हैं, अपने आप को बता सकते हैं, जता सकते हैं, बट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म is getting affected by the stress, जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में हार्मोन्स के रूप में अगर नहीं आते हैं तो उनके जो भी उनका लिक्विड मीडियम है, उस लिक्विड मीडियम के थ्रू वो शो करते हैं। बट हियर वी आर रिलेटेड विद द हार्मोन्स, तो हम ह्यूमन को ही लेकर के चलते हैं। सो दैट इज द स्ट्रेस, जो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो स्टिमुलाई है उससे जिस तरह से हम अफेक्ट होते हैं, that may be called as, अगर stress को हम देखें तो the stress may be defined as the action of stressors और stimuli। ये कई तरह के डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं, एनवायरनमेंट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, हाई एक्सरसाइज की वजह से, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेटाबॉलिक फैक्टर्स जो भी हार्मोन्स को स्टिमुलेट कर सकें या नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकें टुगेदर, वो सारे स्टिमुलाई को हम एक साथ कह सकते हैं स्ट्रेसर्स। और ये स्ट्रेसर्स दे एक्ट ऑन द इफेक्टर्स which are the nervous system और बॉडी की होम्योस्टेसिस को, इंटरनल एनवायरनमेंट को, बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमने देखा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम along with its other parts, that is the sympathetic nervous system, autonomic nervous system, and the hormonal secretions of the endocrine glands, ये together they maintain the homeostasis. This is the internal environment जो constant होना चाहिए। अगर वो disturbed होता है तो दैट मे बी ड्यू टू वेरियस रीजंस। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है स्ट्रेस। तो अब हम देखें, एक बार शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम वी विल सी वन बाय वन इन दीस स्लाइड्स द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। सो द स्ट्रेसर्स आर द स्टिमुलाई that affect and that lead to changes in the serum level of many hormones, including glucocorticoids, catecholamines, growth hormone of pituitary and prolactin। ये सारे जो हार्मोन्स हैं मेनली ये देख रहे हैं हम कि ये हम देख करके बल्कि आ रहे हैं कि जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीशन कंट्रोल होता है पूरा बॉडी का कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। और आज हम देख रहे हैं स्ट्रेस, तो हम शुरू करते हैं एक रीजन बॉडी का, दैट इज द जनरल सिस्टम्स किस तरह से होते हैं। स्टिमुलाई इफेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को, मोटर न्यूरॉन्स को, वो मोटर न्यूरॉन्स
थ्रू द आईज एंड ईयर्स, या इन दोनों से, या कुछ और भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो ऑर्गन्स को इन्फ्लुएंस करें। ज्यादातर आई और ईयर से ही स्ट्रेस रिलेटेड स्टिमुलाई अफेक्टेड होते हैं, एंड दे आर कैरीड टू amygdala. Amygdala is the reason. This is amygdala, region of brain. Rather, we can see a little enlarged region of it. थोड़ा सा enlarge करके देखें। एक्चुअली इस स्लाइड में मुझे थोड़ा मैं बता देना चाहती हूँ कि स्ट्रेस हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, और उसके बाद फिर हम स्लाइड्स में तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। सो दिस इज द एमिगडाला रीजन ऑफ द ब्रेन दैट एक्ट्स एज द कमांड सेंटर, और यहाँ से एमिगडाला से these effectors or the motor neurons, they are received by the amygdala region through the neurotransmission amygdala. This amygdala, that these stressful responses can lead to endocrine disorders, ये हम लोग बाद में देखेंगे। These changes or these hormonal changes, this amygdala, it acts as a command center, and it commands the action of hypothalamus. Hypothalamus word से आपको याद आ गया होगा कि hypothalamus is the part of the brain. This is amygdala. Here the motor neurons bring the sensory messages, external stimuli के, यहाँ से ये पहुँचते हैं hypothalamic region में। Hypothalamic region में पहुँचने के बाद they communicating with the rest of the body through the nervous system, so that person has energy to fight or flee. That is 3F responses: fear, flight, and fear, fight, and or flight. ये 3F response, जो क्विक रिस्पॉन्स जो स्ट्रेस की वजह से आता है, इसको हम कहते हैं फियर, फाइट एंड और फ्लाइट। किसी भी तरह का एक्शन से एक फियर, हमेशा डर ही यहाँ पे नहीं है, एक वजह जिसकी वजह से स्ट्रेस का के हार्मोन्स रिएक्ट करेंगे, फाइट एंड और फ्लाइट। उसकी जगह उससे हम फाइट करेंगे या उससे भाग जाएंगे, फ्लाइट, दैट इज द टू फ्ली। सो दैट इज फियर, फाइट एंड फ्लाइट, and this is controlled by this amygdala sends distress signal to hypothalamus. This is the amygdala is sending signal to hypothalamus. Then hypothalamus, as we have already seen, ये दो तरह से काम करता है, इसके पहले के क्लास में हम देख चुके हैं। ये दो तरह से कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस पूरे बॉडी के कोऑर्डिनेटेड सिस्टम को, थ्रू द न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड रिसेप्टर्स। ये दो तरह से कंट्रोल करता है। पहला होता है anterior pituitary and posterior pituitary को कंट्रोल करता है। posterior pituitary को थ्रू CRF और CRH, that is the corticotropic releasing hormone or corticotropic releasing factors के थ्रू ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे पहुंचता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे इसका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है हाइपोथैलेमस। दैट वी हैव सीन कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर भी इस एंटीरियर पिट्यूटरी this hypothalamus releases a number of hormones that together we can say that is the CRH। अभी हम देख रहे हैं स्ट्रेस से रिलेटेड हार्मोन्स के बारे में, तो हम बस यहाँ कंट्रोल करें क्योंकि ये एड्रिनल से स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा रिलीज होते हैं। हालांकि इन टर्न वो बाकी जितने भी एड्रिनल हार्मोन्स हैं उन सारे पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं, दैट वी विल सी जस्ट नाउ। तो CRH और CRF के थ्रू दिस हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, and on another hand this hypothalamus through the sympathetic nervous system
it reaches adrenal medulla. So in the condition of stress, ये दो मेन endocrine glands affected होते हैं और इनके hormones. पहला हुआ pituitary gland, anterior and pituitary gland, posterior pituitary lobes, and that are controlled through the cortico-releasing hormone or cortico-releasing factors that control the anterior and posterior pituitary. From here, another hormone is stimulated, secretion of another hormone is stimulated, that is ACTH, adrenocorticotropic hormone. ये सब हम डिटेल्स हम देख चुके हैं इसके पहले, और ये भी हमने देखा है कि पोस्टीरियर हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एक्चुअली एग्जैक्टली कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है. हाइपोथैलेमस से ही ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन सिक्रीट होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर होते हैं, जिसमें वासोप्रेसिन और द एंटीडायरेटिक हार्मोन का बहुत मेजर रोल होता है स्ट्रेस को कंट्रोल करने में, और बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं. पोस्टीरियर पिट्यूटरी का वो पार्ट जहाँ से जहाँ जिसमें स्टोर रहते हैं वासोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन बर्थ प्रोसेस को कंट्रोल करता है और वासोप्रेसिन यूरिन रिलीज को कंट्रोल करता है, जिसपे स्ट्रेस का बहुत बड़ा इफेक्ट दिखता है. दैट वी विल सी. And that another method is affecting on adrenal medulla, or that we have seen adrenal medulla secretes epinephrine, norepinephrine and catecholamines. इसके साथ एड्रिनल मेडुला एक और हार्मोन सिक्रेट करता है, डोपामाइन, और डोपामाइन को हैप्पी हार्मोन कहते हैं. तो हैप्पी हार्मोन का स्ट्रेस से थोड़ा कम रिलेशन है. सो वी आर नॉट लुकिंग इनटू हियर इनटू डोपामाइन, बट हाँ, अगर हम स्ट्रेस को कंट्रोल करें तो डोपामाइन के सिक्रेशन को बढ़ा करके स्ट्रेसफुल कंडीशन को कंट्रोल किया जा सकता है. सो लेट अस कम टू द आवर टॉपिक, दैट इज द कैटेकोलामाइंस. नाउ these epinephrine, नॉरएपिनेफ्रिन एंड कैटेकोलामाइंस, इन पर जो एक्शन होता है, जो अभी हमने देखा था 3F एक्शन, दैट इज दे एक्ट इन वेरी क्विकली on the concerned region, and by the 3F action, that is fear, fight or flight. These three actions are shown, and this is the fast action affecting the conditions of the दोनों ही कंडीशन में, स्ट्रेस का कंडीशन चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो प्रोलॉन्ग्ड हो, उसमें काफी कुछ रिलेशंस बाकी सारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, खासतौर से लिवर का से ग्लूकोजेनेसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये सारे प्रोसेसेस अफेक्टेड होते हैं, और इनकी वजह से काफी सारे बॉडी कंडीशंस, क्लिनिकल कंडीशंस या डिजीज कंडीशन या डिसऑर्डर्स कह सकते हैं, वो अपीयर होते हैं. दैट वी विल सी जस्ट नाउ. एक बार हम देख लें कि स्ट्रेस किस तरह से हार्मोन्स को अफेक्ट करता है. तो ये हो गया वेरी फास्ट एक्शन बाय द एक्शन ऑफ 3Fs. एंड देन इज द anterior pituitary and posterior pituitary, they release the major stress hormone. एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है कॉर्टिसोल एंड वासोप्रेसिन. So this is another hormone. These are the hormones which are secreted, and these hormones, they affect the stressful conditions को कैसे control करेंगे. This is the basic principle. These are the stressors, then effectors. They affect amygdala. This is the command center that sends the signals. Cell signaling से neurotransmitters के through different cells activate होते हैं. Hypothalamus तक पहुंचता है. Hypothalamus 2 ways में stress को control करता है. Sympathetic through sympathetic nervous system जो directly adrenal medulla पर पहुंचता है, through CRH or CRF, corticotropic releasing hormone or corticotropic releasing factors,
to the pituitary, anterior and pituitary, posterior pituitary lobes को affect करता है. Anterior pituitary ACTH release करता है जो adrenal तक पहुंचता है. It reaches the adrenal cortex and here it enhances the secretion of cortisol and vasopressin. ये दो हार्मोन्स स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं. तो कॉर्टिसोल का जो एक्शंस होता है दैट इज अ प्रोलॉन्ग्ड एक्शन दैट, और अगर ये बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स तक क्रिएट कर सकता है. डायबिटीज मेलिटस की तरह की बीमारियां और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, थायराइड से गॉइटर, थायराइड को अफेक्ट करके गॉइटर डेवलप कर सकता है. बहुत सारे डिसफंक्शंस, डिजीजेस, गोनाडोट्रोपिन्स को की सिक्रीशन को अफेक्ट करके गोनाड्स को, सेक्सुअल एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप कर सकता है या बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग में कन्वर्ट कर सकता है. मेल्स में सेक्सुअल एक्टिविटीज, इरेक्टिबिलिटी ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकता है. सो बहुत सारे एक्शंस हो सकते हैं, बट दैट इज द cortisol. So, but as we have already seen, cortisol एक ऐसा हार्मोन है जो खाने में नमक की तरह काम करता है. कम हो जाए बेस्वाद हो जाता है, ज्यादा हो जाए बेस्वाद हो जाता है. ठीक ठीक रहना चाहिए तो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है. और ये अगर कॉर्टिसोल का फंक्शन डिसबैलेंस होता है तो बॉडी के सारे पार्ट्स डिसबैलेंस होते हैं, एंड दैट कॉजेज द hazards of stress that we are going. So in this way, this is in very short we have seen what is the stress, what are the stressors, what are the effectors, and where they affect, and what are the hormones that create all these disorders. Now these disorders, they are they may be very fast and they may be resumed जैसे ही स्ट्रेस का, जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी से रोड क्रॉस कर रहे हैं और कोई गाड़ी आ जाए तो इमीडिएटली आप स्टॉप होते हैं. तो जो तेजी से एक्शंस होते हैं उसके साइड एक्शंस में इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्वेटनिंग हो सकती है, आईबॉल्स का सिकुड़न हो सकता है, स्किन, हाथ पैर कांपने लग सकते हैं, ट्रिमर्स इन हैंड एंड फिंगर्स हो सकते हैं. सो a number of factors appear, a number of symptoms appear, and as soon as the cause or the stressor goes away, these hormones, they are relaxed. हमने पहले ही देखा है नेगेटिव फीडबैक से इन हार्मोन्स के कंट्रोल को कंट्रोल कर लिया जाता है और बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है. सो बहुत मेजर डिफेक्ट्स क्रिएट होने के चांसेस कम होते हैं due to the control of stress through sympathetic nervous system. But that is the another way is just reverse, जिसमें cortisol का secretion होता है. cortisol, you know, cortisol से जो secrete होते हैं, this is, so this we can express here in this way. This is the hypothalamus. This hypothalamus is sending secretions to pituitary, including anterior and posterior lobes, and it is directly sending neurotransmitters to adrenal medulla. अगर ये direct control होता है, here the hormones are epinephrine, norepinephrine, and catecholamines. Then this pituitary secreted ACTH that acts on adrenal cortex to secrete mainly the cortisol that handles the stressful condition, or if it fails to handle the stressful condition, then a number of hazards may appear, health hazards may appear, may cause many diseases even
that is Graves' disease, gonadal dysfunction, psychosexual dwarfism, ओबेसिटी। ये लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि कितने तरह के प्रॉब्लम्स, एडिसन्स डिजीज, क्रेटिनिज्म, ड्वार्फिज्म, डायबिटीज मेलिटस, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, वो भी जो ज्यादा सीरियस फॉर्म है डायबिटीज का, ये सारे रीजंस हो सकते हैं। सो दिस इज इन शॉर्ट, एकदम बहुत शॉर्ट में मैंने बताया कि स्ट्रेस किस तरह से, stress can lead to changes in the basic things I have told. Now let us see quickly through these slides the stress management, कैसे इस stress को, ये stress कैसे evoked होता है, provoked होता है, और कैसे इसको हम manage कर सकते हैं। तो in general तो बहुत सारी चीजें हैं, साइकोलॉजिकल बेसिस पे अपने आप को सुधारना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, हैप्पी रहना, जो थ्योरेटिकली बहुत आसान है बताना, बट देयर इज नो वे। बहुत सारे स्ट्रेसेस ऐसे हैं जिन्हें आपको हैंडल करने के अलावा आपके पास चॉइसेस ही नहीं छोड़ा गया। सो इन एवरी कंडीशन यू हैव टू गो थ्रू। So some important points: these stressful conditions may cause Graves' disease, gonadal dysfunction, dwarfism, psychological dwarfism, और बहुत सारे diseases we have seen in the last video. Then stress can alter the clinical status of many pre-existing endocrine disorders like the precipitation of adrenal crisis, thyroid storm, and so many hormonal conditions को affect कर सकता है stress. Now, stressful situation trigger a cascade of स्ट्रेस हॉर्मोन्स। कैस्केड इसके पहले हमने देखा है, रिसेप्टर्स जब हम देख रहे थे वाटरफॉल की तरह, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा इफेक्ट्स दिखता चला जाता है हॉर्मोन्स पर इनका, एंड अकॉर्डिंगली अ नंबर ऑफ traits, a number of characters, a number of effects are seen, that is in our well orchestrated physiological changes bringing about, that may include heart pound, heart की beating बढ़ सकती है, breathing बहुत तेजी से सांसें चलने लगती हैं, मसल्स टेंस हो जाते हैं, मसल्स में क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, मसल्स में ट्विंगलिंग होने लगती है, बहुत हेवी स्वेटिंग होती है। So these are the reactions जो, as we have seen, 3F response होता है, fear, flight or fight, and then the prolonged symptoms, the prolonged effects may cause much more severe conditions. Now here in these two representations, these are the hormones which are mainly, you can say, the chief stress hormones are CRH, ACTH, growth hormone releasing hormone secrete करता है जो growth को affect करता है, as we have seen, psychological dwarfism में affect आ सकता है, then that is the human growth hormone की वजह से, then thyrotropin releasing hormone TRH and TSH, ये thyroid पे affect करता है, and the resultant stress responses on different conditions. This is a direct adrenal medulla पे आ रहा है, यहाँ this is the hypothalamic region, from here through sympathetic nervous system पे adrenal medulla को control affect करता है stress, resulting into the release of epinephrine and norepinephrine. That is, response will be flight or fight, and it is also called as 3F, fear, fight and flight. Then it through anterior pituitary ACTH is released, adrenal cortex, cortisol को release करता है, and stress responses due to this cortisol are the lipolysis, that is जो lipid store रहता है, उस lipid को निकाल करके liver cells से बाहर निकाल करके सोमैटोट्रोपिन के की secretion को enhance कर देता है। As I have told you, ये cascade of hormones releasing होने लगते हैं और लिवर से स्टोर्ड ग्लाइकोजन को निकाल करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लगता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द फेनोमेनन जो ग्लूकोज ब्लड सीरम में एक्सेसिवली दिखने लगता है, और दैट में रिजल्ट इनटू, अगर वो प्रोलॉन्ग कंडीशन रहा तो वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकता है। दैट इज प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, सेंसिटाइज्ड ब्लड वेसल्स को वासोकंस्ट्रिक्शन से it can release blood vessels constrict कर सकते हैं, then reduced inflammations,
These are the results of cortisol. Then the IGFs are the secretions from the liver cells that stress response में lipolysis and glycogenolysis. Glucogenolysis we have seen, glucose में convert होता है, और glycogenolysis, this is the conversion of glycogen into glucose, and gluconeogenesis is the conversion of lipid like lipolysis, lipid की तरह के जो molecules हैं, amino acids हैं, उनको कन्वर्ट करने लगता है ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने लगता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस को. सो दीज आर द स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस. देन इफेक्ट ऑन थायराइड हार्मोन पर इफेक्ट होता है, T3 T4 की रिलीज को इफेक्ट करता है, और T3 T4 से रिलेटेड जितने भी डिजीजेस हैं, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, या जितने भी डिसऑर्डर सिम्टम्स हैं, they may appear. So this is the stress response, the language you can get through here. These both presentations are for the stress से किस तरह से हार्मोन्स का एक्शन होता है और कैसे उनके इफेक्ट्स होते हैं. नाउ द स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज. स्ट्रेस क्यों होता है ये हमने देख लिया. वो तेज हो सकता है, जेनेटिक लेवल पे हो सकता है, वो फिजिकल लेवल पे हो सकता है, बहुत जल्दी आके बहुत जल्दी जा सकता है. और कॉर्टिसोल का जो इफेक्ट है दैट इज प्रोलॉन्ग. कम से कम 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स चाहिए कॉर्टिसोल के इफेक्ट को एक्सप्रेस होने के लिए. और उसका ड्यूरेशन, अगर टाइम से कॉर्टिसोल का रिलीज कंट्रोल नहीं हुआ, तो इफ ये प्रोलॉन्ग स्ट्रेस कंडीशन प्रोलॉन्ग करता है, कंटिन्यू करता है, तो दैट मे कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स like the diabetes, even in very premature age, that is specifically the type 1 type of diabetes mellitus, जो कि बॉडी के पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है. ये हम लास्ट क्लास में काफी डिटेल में देखेंगे. सो नाउ अब ये थोड़ा हाइपोथेटिकल, थोड़ा इमेजिनरी कंडीशंस, और जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते हैं, जिसको circadian cycle को affect करता है, that also we can see in the very first in the last we will see कि किस तरह से कुछ representations के माध्यम से स्ट्रेस को मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं. ईटिंग हेल्दी डाइट्स, रेगुलर एक्सरसाइज, गेटिंग प्लेंटी ऑफ स्लीप, स्लीप डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक योगा, डीप ब्रीदिंग, मसाज, meditation करके massage is very effective for relieving the stress conditions. Then keeping journal, writing about our thoughts, हम be grateful, अपने आप gratitude होना चाहिए. Taking time for hobbies, reading, listening, music, watching, running, अपने hobbies पे time बिताइए. So these are the healthy friendship. The good relationship is always health, wealth and relationship. These are the three very important things. Wealth कम है, health and relationship and friendship and ethical moral values are very much helpful in managing the stress. So organizing and prioritizing what we need to accomplish at home. So these are the things. और बहुत extreme conditions में professional counseling से भी stress को manage किया जाता है. When we react to life stresses the way you do, जैसे हम लाइफ को react करेंगे, stresses वैसे ही काम करेंगे, और स्ट्रेस की वजह से जो इफेक्ट्स हैं वो कम या ज्यादा देर दिखेंगे. So now how we react to our life stresses is affected by factors such as genetics, life experience. जेनेटिक ही होते हैं, पर अगर लाइफ एक्सपीरियंस से स्ट्रेस ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, लाइफ एक्टिविटीज से ज्यादा अफेक्टेड होते हैं. So when stresses are always present, we constantly feel under attack. That fight or flight reaction stays turned on. जिसको तुरंत खत्म होना चाहिए, fear, fight and flight, ये खत्म नहीं होता है अगर stresses ज्यादा prolonged present रहते हैं तो. And that long-term activation of stress response and overexposure to cortisol may cause all these symptoms or health problems. That includes anxiety, depression, digestive problems, headaches, muscle tension and pain,
हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, स्लीप प्रॉब्लम्स, वेट गेन, वेट लॉस कभी कभी होता है, पर स्ट्रेस की वजह से इमीडिएट इफेक्ट्स में वेट गेन ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है. मेमोरी एंड कंसंट्रेशन इम्पेयरमेंट, देन it is that is why it is important to learn healthy ways to cope with the life stressors. Theoretically it is very easy when some conditions uh, that as I have already told you, मैं भी बहुत ज़्यादा stress conditions में सफ़र कर रही हूँ. Anyway, we are, so these are the conditions जो stress को जन्म देते हैं और stress के side effects को ज़्यादा लंबा या ज़्यादा कम करते हैं. लंबा होने से बचने के लिए, स्ट्रेस कंडीशंस को प्रोलॉन्ग होने से बचने के लिए हम बहुत सारे प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए. नाउ these hormonal changes during stress that you can take from the, ये जो theoretical part है ये आप इन नोट्स से ले सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग कल भी देख चुके हैं. कैटेकोलामाइंस का क्या इफेक्ट होता है, कॉर्टिसोल के क्या इफेक्ट्स होते हैं, किन किन हार्मफुल इफेक्ट्स को एक्सप्रेस करते हैं. दीज आर दैट मे लीड टू कार्डियक इनपुट, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. मसल्स के में कीटोन्स बनने लगते हैं, कीटो एसिडोसिस की स्थिति आ जाती है. कीटोन्स आर हार्मफुल. ओवर एक्सप्रेशन, ओवर स्ट्रेस कंडीशंस हो जाते हैं मसल्स के. देन सोडियम रिटेंशन, सोडियम बहुत ज्यादा रिटेन होने लगता है. रिड्यूस्ड इंटेस्टिनल मोटिलिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स जो हम आगे देखेंगे वो भी स्ट्रेस की वजह से बहुत बार होता है. क्यूटेनियस वास्को कॉन्स्ट्रिक्शन, स्किन के जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट करने लगते हैं. इंक्रीज ग्लूकोज रिजल्टिंग इनटू डायबिटीज. देन ब्रोंक्यूलर डायलेशन, जो अल्वियोलाई हैं लंग्स में वो डायलेट कर जाते हैं. एंड बिहेवियरल एक्टिवेशन. So these are the main reasons that are done due to the secretion of the catecholamines. Then increased activation of adrenosympathetic system during occupational stress. और adrenosympathetic system अगर impressed evoked होता है, provoked होता है, तो naturally adrenal cortex को adrenal medulla को affect करेगा और further disorders or disbalances appear होंगे. Then this another hormone is vasopressin. You know, ये secrete करता है. Vasopressin is antidiuretic in function. It is also called as antidiuretic hormone, ADH. और इसकी secretion से excessive urine का production होता है. That may cause a number of problems that we have seen in the last video. ADH के क्या-क्या side effects होते हैं ज्यादा होने से, कम होने से. ये दिस एंटीडायरेटिक हार्मोन का की डेफिशिएंसी अगर हो तो यूरिन का एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगता है. दैट मे लीड टू डिहाइड्रेशन, अल्टीमेटली टू डेथ इवन हो सकता है. इतना ज्यादा यूरिन की सिक्रीशन होने लगती है. Then are the gonadotropins that we have already, इसके पहले हमने, और इसकी तो हमने पूरी स्लाइड देखी हुई है कि गोनाडोट्रोपिन्स की डेफिशिएंसी हो तो क्या क्या प्रॉब्लम होंगे. और गोनाडोट्रोपिन्स पे बहुत एडवर्स, गोनाड्स पे बहुत एडवर्स इफेक्ट्स डालते हैं कॉर्टिसोल के ओवर सिक्रीशन से. So these are the certain effects of prolonged stress on our body: headaches, increased depression, insomnia, नींद नहीं आती है, weakened immune system बहुत ज़्यादा badly affected होने लगता है, तेज सांसें चलती हैं, risk of heart attack, pounding heart, fertility problems, erectile dysfunction, missed periods, tense muscles, low sex drive, stomach ache, high blood pressure. So these are high blood sugar resulting into diabetes. So this is the diagrammatic representation and this is the linguistic representation of the effect of prolonged stress. Now, the thyroid hormones. Thyroid hormones are the T3, T4 and calcitonin. All these hormones, thyroxine hormones पर ज़्यादा stress का effect दिखता है and that inhibits the secretion of TSH. TSH का deficiency होने लगती है तो definitely एक तो बहुत ज़्यादा बड़ा जो imbalance दिखेगा, that is the goiter and all the related defects that may lead to the Cushing's disease, Addison's disease,
all those diseases. Addison's disease of course adrenal से होता है, but acromegaly, ये सब चीजें हालांकि स्ट्रेस अगर प्रोलॉन्ग करे और टाइम पीरियड, एक्रोमेगाली जल्दी नहीं दिखेगा क्योंकि वो तो चाइल्ड के डेवलपमेंट के साथ दिखता है, बट बाकी के डिजीज के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं. देन आर द ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द pituitary. Another is the growth hormone. This is also increased during acute physical stress. Now, this hyper secretion of growth hormone, of course, it can do the improper development of the body parts, and that can increase up to 2 to 10 fold. This the grading, the extremity of the hormone secretion may rise to 10-fold secretion, and that may cause insulin antagonistic effect, that is enhanced metabolic activity. ये बहुत ज़्यादा metabolic activities को enhance कर देता है, and that responses are rarely seen. Sorry. However, साइकोलॉजिकल कंडीशंस में, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में थायराइड के हार्मोन्स का बहुत बैड एडवर्स इफेक्ट कम देखा गया. देन प्रोलैक्टिन दैट कॉजेज द लैक्टेशन. तो बर्थ प्रोसेस में, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी से जो वुमेन फेस कर रही हैं प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस को, प्रेगनेंसी स्ट्रेस को, उनमें लैक्टेशन बहुत एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है. देन इंसुलिन, दैट इज दिस प्रोलैक्टिन फ्रॉम ACTH, from anterior pituitary, that affects the mammary glands, and lactation is affected. Then insulin from pancreas. The pancreas is another gland which is very much affected, or prolonged stress condition में diabetes type 1 diabetes mellitus हो सकता है. that और उस डायबिटीज मेलिटस में क्या क्या होता है, जिसका सबसे आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, and by and other effects we have already seen in details in our previous video. You can go through the playlist to go if you want to go through those videos. Then stress as a precipitating factor on cause of endocrine. तो ये तो हम लोग देख ही चुके, अभी जस्ट हम देख के आए. डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 टाइप हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म, ज्यादातर हाइपरथायराइडिज्म के कंडीशंस होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म के कंडीशंस ज्यादा होते हैं, हाइपरथायराइडिज्म के कंडीशंस कम होते हैं. देन गोनाडल डिस्फंक्शंस दैट वी हैव सीन. देन साइकोलॉजिकल और साइकोसोशल ड्वार्फिज्म is the extreme form of failure to thrive and may be associated with dramatic behavioral abnormalities. बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जब स्ट्रेस की कंडीशंस प्रोलॉन्ग करते हैं तो बहुत तरह के बिहेवियरल डिफेक्ट्स दिखाई देने लगते हैं. दैट मे रिजल्ट्स इनटू व्हेन ग्रोइंग पीरियड में अगर ये इफेक्ट्स दिखाई देते हैं तो साइकोलॉजिकल साइकोसोशल डार्विज्म में इट मे कन्वर्ट. So these the details of again I've told you these details you can go through for your notes through all these slides. Then obesity is the another improper effect of the stress that reads overeating. इसमें होने लगता है cortisol के secretion से, fat deposition से, adipostic signal, एक leptin that we have seen, leptin hormone का secretion by the gastrointestinal fats. Then granule secretion, increased appetite that causes into the increased appetite and food intake. बहुत ज़्यादा eating disorder होता है जिसकी वजह से obesity that results into obesity. The stress genes which have been selected under pressure in ancient environments may have not adapted to the rapid environmental changes of today. पहले की तुलना में पहले ज्यादा स्ट्रेस को मैनेज करना आसान था आज की तुलना में. नाउ स्ट्रेस ऑन प्री एग्जिस्टिंग एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, उन पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है स्ट्रेस का. In adults, relationship between stress and poor diabetic control is established. Then Addison's disease is there, diabetic disease is there, that type 1 diabetes होता है. These all things we have seen. Thyroid crisis, thyroid के effects क्या क्या हो सकते हैं, that is mainly the Graves' disease, that is hyperthyroidism, over secretion of thyroids होने लगते हैं. That is the main
deficiency, and that is the biochemical. This scientist has observed the stress exposure is not related to biochemical severity of GD. GD is Graves' disease. Graves' disease, it is the Graves' disease is directly related to clinical severity of Graves' disease due to the stress. So this is the in not very short. I won't say it is in very short. We have discussed. हाँ, बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं गए हैं, क्योंकि डिटेल्स में इसके पहले के क्लास में बहुत लंबा क्लास हम देख चुके हैं कि किस तरह से हार्मोन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू, रिसेप्टर्स के थ्रू, पोस्ट मैसेंजर हार्मोन के थ्रू, सेल सिग्नलिंग के थ्रू, इनके पहले के क्लासेस में वी हैव ऑल सीन वो सारे रिएक्शंस तो यहाँ पर वैसे ही अकॉर्डिंगली होंगे, उनको ट्रिगर कैसे करता है स्ट्रेस, दैट वाज आवर मेन कंसर्न ऑफ दिस वीडियो. आई होप यू विल लाइक इट. दिस इज द कंक्लूजन. स्ट्रेस क्या क्या कर सकता है, कैसे उसको हमको हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द फियर, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेज, व्हाट आर द प्रोलॉन्ग्ड रिस्पॉन्सेज, and how they should be controlled for a better living. Thank you. Do like, share, and um, subscribe the channel. Enhance the subscribers so that we can go for certain regular. We can go अगर common link एक YouTube मुझे provide करे तो छोटे छोटे problems हम कभी एक link आप सबको भेज करके we can meet and we can discuss certain problems. Press the bell icon to get notification of upcoming videos. Thank you.